joined by Mr. Omesh Saigal, who's been a former Chief Secretary of Delhi. Good afternoon, Mr. Saigal. Thank you for taking our time and joining us over here at Mirror Now. My limited question to you would be, since you have also been part of the government in the past, can any particular political party, for reasons not provided or clarified upon, block media from doing their job in the manner in which Arvind Kejriwal's government has blocked my colleagues Ila and Tejshree without providing any information about why they are being blocked? Well, I think it's quite without any precedent. I've never heard of this before, that such a thing happens. It has happened. If it has happened in the assembly, obviously the speaker must have been consulted, because the speaker has control in the assembly, not the chief minister. Now, if the speaker has stopped them, of course she or he must be having a reason for the same, and that reason should have been communicated to the reporters. Now, what has happened here seems to be that some oral orders are there, and though they have a pass, they are still not being allowed to enter. The pass must have been issued by the Assembly Secretariat. So I don't know how the police or any security fellows have any authority now to stop them. They can't be stopped. You can cancel the pass. You can say the pass is no longer valid, and you inform them that your pass is no longer valid. You have to get a new pass. Then I can understand. But this is absolutely a negation of the way an assembly functions. These are open, now these are all telecast. So I don't know what you gain by preventing a particular network from getting in. What do you gain? I mean, why should you stop them when everybody else is going? Apparently, it seems so. And this has been telecast live on certain channels. By stopping a person, so it is a very foolish decision, whoever has taken this decision. And I can assure you it is without any precedent. I have not heard or seen. I was in Delhi government for decades. There was never has any such a thing taken place in the assembly or in the secretariat. In the secretariat also, if you have a pass, you are allowed to enter. That's the end of the matter. So here it seems to be quite vindictive. It seems to be punitive. And I don't know It seems how to be you can... vindictive. That's exactly what Mr. Saigal is saying over here. Mr. Saigal, hold that thought. I will come back to you, as I'm also joined by BJP spokesperson from the national capital, Neoma Gupta. My apologies to you for keeping you waiting, Mrs. Gupta. But we did hear what Mr. Saigal was mentioning. He said that these are unprecedented scenes that he's seeing right now. He has also been part of the government for decades on, and the media has never been given this sort of a treatment. Now, Aam Aadmi Party government often tries to be the flag bearer of freedom of expression, freedom of the press. But when they have to face the heat, when they have been asked some tough questions, they are going to turn around and block the media in this manner. They want to try and threaten the media, is the message that they want to try and send across. I think this is a clear act of bullying. It is completely unacceptable. It is in clear violation of Article 19(1)(a). All these journalists were doing what they were doing their job. They had a pass. There was no trespass whatsoever. Even if the pass is invalid, that's a matter of procedure. But you denying them to come just because they're asking you questions for which you don't have answers doesn't render them in a place of public property and not allow them to enter. There has to be some basic etiquette. If there's a problem with a certain media house, or you have certain bones of contentions, you go to the court of law. And there's a proper process of redressal on all these accords. If the media is overstepping in a certain way, they are answerable to you within the framework of the Constitution. But taking a decision of denying these young people to go and ask questions or be a part of a procedure in public property is a complete act of bullying. It is against democracy. On one hand, yes, they are constantly questioning whether we are in a democratic setup because of these certain political decisions, but this is grassroots level. Absolutely, Ms. Gupta. Please hold that thought. I'm sorry to interject you right now. I'm also joined by the Congress's Delhi President, Mr. Anil Chaudhary, joining me live right now. Mr. Chaudhary, thank you for taking our time and joining us over here. We did put out those visuals and the entire sequence of my colleagues Tejshree and Ila, where they've been blocked from entering the Delhi Assembly without providing any reasons. Now, the Delhi Assembly is a place that is meant for the people at large. It has been built by the taxpayers' money, and it is not the private property of Aam Aadmi Party or any political party leaders.
Do you think this sort of a treatment is allowed to be meted out to my colleagues who had valid passes, Mr. Anil Chaudhary? देखिए, मैं एक चीज तो बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ। हमेशा से एक मीडिया को लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ कहा जाता रहा है और मीडिया जो है मेरी नजर में और कांग्रेस की दृष्टि में ये कि आम जनमानस तक की जो बातें हैं या जो आम जनता को सरकार की द्वारा जो नीतियां बन रही हैं, क्या डिस्कशन है, एक माध्यम होता है मीडिया। आज यदि मीडिया का इस तरह से व्यवहार किया जाता है तो ये एक तरह से लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात मैं कहूंगा। और ये अधिकार अरविंद को नहीं दिया जा सकता कि आप जनता की आवाज या जनता के सवालों को आप सरकार से पूछने से रोकें। आखिर ऐसा क्या मसला है कि अरविंद केजरीवाल कुछ छुपाना चाहते हैं, इन सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं? ये बात लगातार कांग्रेस पार्टी उठाती रही है। सवाल इस बात का है कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह से केंद्र की सरकार रवैया अपनाती है वही रवैया अरविंद केजरीवाल अपनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमें एक बात को और चीज को थोड़ा सा समीक्षा करनी होगी। यदि ऐसी स्थिति आज उत्पन्न हो रही है कि मीडिया को रोका जाता तो कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है। ये मीडिया को भी समीक्षा करने की आवश्यकता होगी कि एक व्यक्ति विशेष चैनल के ऊपर इस तरह की कार्रवाई कहां तक उचित है, क्या कारण है, क्या वाकई मीडिया भी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभा रहा है? पिछले दिनों जिस तरह से कुछ कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह पत्रकारिता पे खड़े हुए हैं, तो इन लोगों का इस तरह का दुशासन होता है कि मीडिया को रोकने का बट काम अनिल चौधरी जी, मैं इस बात में माफ करिएगा आपसे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरी जो कॉलीग्स को ब्लॉक किया गया है वो पिछले 2 दिन से दिल्ली असेंबली में खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो काम हो रहे थे असेंबली के अंदर, वो सारी चीजों पे वो खड़े उतरे थे और वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे उनके ऊपर में ये पिक एंड चूज सिलेक्ट करना कि हम ये रिपोर्टर को अलाउ करेंगे पर हम ये रिपोर्टर को नहीं अलाउ करेंगे, ये हक आम आदमी पार्टी को या दिल्ली असेंबली के ऑफिशियल्स को कौन देता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये कोई सरकार के पैरोल पर ये पत्रकार नहीं है। पत्रकार जनता के नुमाइंदगी करते हैं और हम जैसे नेता वहां जब असेंबली में कानून बनाते हैं तो स्वाभाविक है जनता की आवाज 2 तरीके से उठती है। लेखनी जो आप लोग करते हैं उसको रोकने का काम यदि आज अरविंद करते हैं तो कहीं ना कहीं अरविंद का ये व्यवहार दिखाता है कि वो प्रश्न से भागते हैं। उनके घर के इशू पे आपने न्यूज ब्रेक करी, मैं साधुवाद देता हूं। जिस तरह से कथनी करने का फर्क अरविंद का दिखाई दिया, ये बात तो मैं लगातार पोल खोल यात्रा हो, शराब नीति हो, मैं उठाता रहा। और इला और आपके जर्नलिस्ट को मैं जानता हूं, हमेशा वो गली मोहल्ले में घूमे हैं, उन्होंने आवाज को दिखाया, लोगों की परेशानी को दिखाया है। मेरा तात्पर्य केवल आपके इन जर्नलिस्टों के इशू पे नहीं है, ये मैं घोर निंदा करता हूं, इसकी बहुत ही कड़ी निंदा के साथ साथ भर्त्सना करता हूं और सवाल पूछता हूं अरविंद से, आखिर ये अधिकार आपको कौन दे सकता है कि आप पत्रकारों को असेंबली में कवर करने से रोकें? और वो भी पिक एंड चूज। कई पत्रकार हैं, उंगलियां उन पे भी उठती हैं जो उनके लगातार एजेंडे पे काम करने की कोशिश करते, तो डिबेट इस पे भी होना चाहिए। क्या निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता हो रही है? अनिल चौधरी जी, मैं ये सवाल आपसे एक और बार पूछूंगी कि शीला दीक्षित की सरकार भी दिल्ली में रही है, कांग्रेस भी सरकार में रही है दिल्ली में, और कई प्रश्न शीला दीक्षित के ऊपर भी उठाए गए थे और उन्होंने प्रश्न का सवाल दिया भी है और कितने सवालों का जवाब नहीं भी दिया है। पर मीडिया को इस तरह से ब्लॉक क्या कभी कांग्रेस ने किया है? जी बिल्कुल, और मुझे आज आपके चैनल को ये साधुवाद कि आपने आज एक ऐसी शख्सियत का नाम रखा जिसने ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ काम किया। मुझे याद है, मैं स्वयं एमएलए था, तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के दरवाजे खुले होते थे, शीला जी का दरवाजा खुला रहता था, आप आइए क्या जानना है। और आज अरविंद का ये चरित्र पहली बार नहीं है। अरविंद ने तो, माफ करिएगा, तमाम पत्रकारों की एंट्री रिसेप्शन तक सीमित कर दी। अरविंद के बगैर वो अंदर आ नहीं सकते। शीला जी का जो जिक्र किया, माफ करिएगा, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र में विश्वास करती रही है और हमने बचपन से सुना है। और एक बड़ा उदाहरण देता हूं, आप मीडिया एक माध्यम था, कांग्रेस ने तो उस पर 2 कदम आगे बढ़ाया, आरटीआई हम लेकर के सूचना का अधिकार। तो अरविंद से सवाल ये पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं देते, जवाब आता आरटीआई से तो कहते हैं जी झूठा जवाब है, मीडिया को रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद पूरी तरह से साबित हो गए हैं, जिम्मेवारियों से भागते हैं, जो घोटाले हैं, Absolutely. And these are the questions. अनिल चौधरी जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए. And these are the questions that the people of the country and especially the national capital is asking Arvind Kejriwal and his government. What are you running away from?
What are you scared from? Why don't you want the media to come inside the Delhi Assembly and cover the legislative proceedings of the House? For the last 2 days, my colleagues Tejshree and Ila were allowed to cover it. Why this arbitrary decision was taken today without providing any clarification on it? Naomi Gupta still continues to be with us, BJP spokesperson from the national capital. Ms. Gupta, you did hear what the Congress party was saying, and the BJP was also in the power in the national capital. Was such a media gag ever put on them? Because if there is nothing to hide, what are you running away from? And please understand, media is so transparent today. If you have nothing to hide, you have a choice not to answer the question. You have a choice if you don't want to engage in a certain topic. That is what you decide to do. But stopping or barring these journalists from entering a public domain is not within the purview of anybody. You cannot take such an autocratic decision. They have a valid pass to enter. They are not trespassing. Just because you are answering them, not being able to answer the questions they don't want to hear, that doesn't mean you stop them from entering. This is clearly in violation of a democratic setup. Absolutely, Ms. Gupta. Thank you for sharing your views over there with us. I'm also joined by Mr. I beg your pardon. I'm joined by Mr. Ajay Mahavar, who is also the BJP MLA. Mr. Mahavar, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए यहाँ पे मिरर नाव पे। हमारे जो कॉलीग्स हैं, हमारे साथ जो काम करते हैं, तेजश्री और ईला को दिल्ली असेंबली में आने से मना कर दिया गया है। दिल्ली के असेंबली के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मना कर दिया है, कोई कारण नहीं दिया गया है। दे हैवंट गिवन एनी रीजन, पर कहा है कि ऊपर से ऑर्डर आया है। ऊपर से किसने ऑर्डर दिया है? क्या लगता है आपको सर कि मीडिया को कौन बाहर रखना चाहता है दिल्ली असेंबली से? दिल्ली असेंबली से मुख्यमंत्री केजरीवाल उनको बाहर रखना चाहते हैं, क्योंकि टाइम्स नाउ ने एक निर्भीक पत्रकारिता का परिचय दिया, एक निडर पत्रकारिता का परिचय दिया, शीश महल को उजागर करने का काम किया। और अब कल जो पाप वाला ऑपरेशन किया है, विधायक नरेश बालियान जो आम आदमी पार्टी के विधायक है उत्तम नगर से, उनके खिलाफ मनी एक्सटॉर्शन और आपराधिक षड्यंत्र जबरन वसूली मिली भगत करके गैंगस्टर्स के साथ जो उनका मामला सामने आया है, साक्ष्य के साथ आया है, इस बात से वो घबरा गए हैं। डेमोक्रेसी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी आज लोकतंत्र का गला घोट रही है। दोनों स्तंभों का, एक तरफ वो टाइम्स नाउ के पत्रकारों को इलीगल रूप से बाहर रोक रही है, किसी को आने नहीं दे रही है अंदर, तो क्या ये लोकतंत्र का सम्मान कर रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी अभी चर्चा विपक्ष को बोलने नहीं दिया, जबकि 2 लोगों का नाम हमने विपक्ष की तरफ से भेजा था। स्पीकर महोदया ने कहा मैं विपक्ष को बोलने नहीं दूंगी, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज सुबह मैंने नियम 54 रूल 54 के तहत मैंने कॉलिंग अटेंशन लगाया था, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जो कि रूलिंग से लगाया था और समयबद्ध लगाया था। टाइम्स नाउ ने जो कल उजागर किया था नरेश बालियान का पाप, उसके ऊपर मैंने ये कॉलिंग अटेंशन लगाई थी, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। मुझे प्रस्ताव को पास नहीं किया गया और मुझे बोलने नहीं दिया गया। और बड़ी ताकत है इनके पास अभी संख्या बल की यहाँ, जिसके कारण वो हमारे किसी प्रस्ताव को कभी भी, हमारे 3.5 साल में एक भी कॉलिंग अटेंशन, एक भी शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार जवाब दे और बताए कि क्या मेरे आरोप गलत हैं? क्या 3.5 साल में विपक्ष का एक भी कॉलिंग अटेंशन, एक भी शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस आपने एक्सेप्ट किया है? और अगर मैंने नारेश वाल देश का एक प्रतिष्ठित चैनल किसी विषय को साक्ष्य के साथ रख रहा है, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही? चाहे वो नरेश बालियान का मुद्दा हो, चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो, बिल्कुल। दोनों मुद्दों पर हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन सदन में हमें मार्शल आउट कर दिया गया। कल भी मुझे मार्शल आउट किया 6 विधायकों समेत। तो मुझे शर्म आती है इन लोगों की घिनौनी राजनीति पर, इनके षड्यंत्र पर, इनकी छोटी मानसिकता पर, इनके छोटे दिल पर, जो बात तो बड़ी करते हैं लेकिन मन के छोटे हैं, मन के काले हैं। Yes, well, thank you. Thank you so much, Mr. Ajay Mahavar, for taking our time and joining us over here at Mirror Now. Ms. Gupta still continues to be with us, the Delhi BJP spokesperson. Ms. Gupta, you know what Mr. Mahavar was mentioning over here is that he wanted to speak about the Balian story and he was not allowed to come up with the calling attention that he had initially submitted.
My minimum question is that if you have a problem regarding the reportage, if you have a problem regarding any particular story which a particular channel or network is reporting, you always have the options of taking the legal recourse if you feel that the story is not genuine or authentic in nature. If you want to question the credibility, you can take the legal recourse. Why would you want to get into the vendetta mode over here and unleash it on our reporters? Exactly what I said. When it comes to freedom of press, there are certain restrictions which are applicable to them. If they are going beyond the scope of what they're supposed to under the Constitution, you have a forum of redressal. You use that forum of redressal to sort out whatever is required to be sought out. But this act of barring journalists in a public space is clear-cut bullying. It is against the democracy. Just because you don't want a certain set of journalists who have triggered you or you don't have answers to their questions, you want to put them on the side, bully them and ask them not to enter public space. This is vendetta. This is not clear democracy. As a public figure, we are all supposed to be transparent. We have give answers to as many questions as one can. However, you cannot use or misuse that power in stopping other people from entering this space. So if you have no answers, don't be a bully. Don't cross those lines because these people are doing their jobs. They are asking you questions because they have the need to ask you the questions. But don't go beyond the framework and take them to the side and say, you're not like this. What I'm seeing by your journalist colleague Ila is pure disrespect to journalism. It's pure disrespect to somebody who holds a pass. There's no trespass whatsoever. They're not forcing themselves in. What are they doing? They were asking questions before. You don't want to answer, don't answer. But don't bully them and don't not allow them to enter something where a taxpayer is paying for that place. So this is clear violation of democracy. It hurts to see this, to be honest. And I've never seen this happen ever before. Well, absolutely, Miss Naomi Gupta, thank you for taking our time and joining us over here at Mirror Now. We shall leave it at that for the moment, but my colleague Ila and Tejshree continue to report on the story, and we here at Mirror Now will continue our focus on this particular story, questioning the Arvind Kejriwal government about why have my colleagues been blocked from entering Delhi Assembly when they had valid passes. There are no clarifications that have been provided so far, and they were only doing their job.